Hello, very good evening, guys. Welcome to BYJU'S exam prep. Very good evening, all of you. I hope everyone is good, fine. Good evening, all of you. Good evening. All right. So I hope so. Last कल आप लोगों ने strength of material practice किया होगा. Lot many good level of questions. And today also will be taking some industrial engineering questions. A good level, not the PYQ. I'm again repeating, PYQ नहीं होगा. It's all new set of questions. And I'll be giving you some question as an homework also. वो set of questions you will be it will be available after the session on the Telegram channel, right? Okay, so before starting the session, I please do let me know whether my audio and video all good, all perfect. Yes. Good evening, very good evening. Let me check from my end. I think all good to go. Yes. 1 second. Yeah. Okay. Good evening. Good evening. कैसे हैं आप लोग सब? So how's your gate preparation going on? क्योंकि अब समय आ चुका है. Only like 3 months is being left out. So at this moment, I'm always saying 3 months. बहुत लोग बोलते हैं सर 4 महीने रह गए. But frankly, effective 3 months अभी आपके पास बचा हुआ है. So you have to now gear up and solve some good level of questions before the gate examination. Now it's not a time to कि ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 1 मार्क्स चल जाएगा. थोड़ा अच्छे लेवल ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे so that you'll be able to boost up your confidence and definitely you're gonna crack this gate examination. Right? Okay. All right. Chaliye. So shall we begin with the session? Yes. Let me check from my end. I think all good. All right. 1 second, guys. Let me check. Yep. फर्स्ट ईयर में हुआ हूँ, क्या करूँ सर? नहीं बिल्कुल देखो, अभी फर्स्ट ईयर में तो आप जो आपके सब्जेक्ट होते हैं ना, जैसे मैथमेटिक्स आप फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, है ना. इसके अलावा यू आर हैविंग वन सब्जेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, तो उस पर ध्यान दे सकते हैं. इट विल बी गिविंग यू एन अपर हैंड, राइट. और उसके अलावा कोशिश कीजिए अपना स्टार्टिंग में ही एप्टीट्यूड को थोड़ा थोड़ा लगाना, क्योंकि एप्टीट्यूड ऐसा टॉपिक है विच यू कैन डेफिनेटली स्टार्ट ऑफ फ्रॉम द फर्स्ट ईयर. ठीक है, आराम से चलता रहेगा, क्योंकि टेक्निकल सब्जेक्ट्स इट विल बी स्टार्टेड इन द सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर, राइट. तो वहां से आप कर सकते हैं. गुड इवनिंग प्रसन्ना, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग. चलिए, प्लीज डू लेट मी नो ऑल गुड विद ऑडियो एंड वीडियो. यस, ऑल परफेक्ट. यप, ठीक है राजू, आई थिंक दैट्स ऑल गुड. तो फर्स्ट ईयर में देखो, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ईयर से आप टारगेट कर सकते हो क्या करना है. आप जो आपके मैथमेटिक्स हैं सब्जेक्ट, उस पर थोड़ा ध्यान लगा सकते हो. यू कैन वर्क ऑन योर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, क्योंकि इट्स ऑल फिजिक्स ओनली, एडवांस फिजिक्स होता है. यू ऑल हैव माइट हैव सॉल्व लॉट मेनी क्वेश्चंस, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा. तो टारगेट सेट करो. आई थिंक दैट इज अ गुड थिंग एंड डेफिनेटली विल बी एक्सेलिंग इन योर कैरियर. ऑल क्लियर? ओके, चलिए. सो लेट्स बिगिन द सेशन एंड आई होप सो ऑल गुड विद ऑडियो एंड वीडियो, right. And everyone has connected with me on the Telegram channel, that is Mechanical by Suraj, and this is all about me. तो चलते सीधा क्वेश्चंस की ओर, है ना. ये आप मेरा टेलीग्राम चैनल, और हाँ, पीडीएफ विल बी रिलीज. आई विल बी सेंडिंग द पीडीएफ ऑफ दिस सेशन, क्योंकि उसमें ना कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस विल बी द योर सेल्फ प्रैक्टिस. सो यू हैव टू प्रैक्टिस दोस क्वेश्चंस. और अगर आपको कोई क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, यू कैन टेल मी इन द your Telegram channel. I'll be sharing the solution for the same. Okay. Ready guys? Okay, so before starting the session, ESE मेंस का जैसे रिजल्ट आ चुका था. जिन्होंने अभी तक नहीं रजिस्टर किया for the free mock interview, all like on weekend we usually have the mock interview, so you can plan with us and we can have a detailed discussion. And this is all about the mechanical and civil. So mechanical की बात करूंगा. Yesterday strength of material का बहुत ही बेहतरीन सेशन हुआ था. Today industrial engineering, then heat and mass transfer, then fluid mechanics, theory of machines. So this is the complete schedule which you can follow for the complete 15 days. 15 days में we are covering almost 500 questions. That is a very good number. On an average अच्छे खासे क्वेश्चन आपके डेली बेसिस होंगे प्रैक्टिस. ओके, सो कैन वी स्टार्ट विद द सेशन? यस, तो कंप्लीट शेड्यूल है. आई होप सो एवरीवन हैज सेव्ड एंड लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन. यस, प्रसन्ना, राजू. आई थिंक राजू के लिए थोड़ा डिफिकल्ट, थोड़ा नहीं बहुत डिफिकल्ट होगा. दिस इज अ सब्जेक्ट विच यू आर स्टडिंग इन 4th ईयर, है ना. बट बाकी लोग, जो लोग गेट के लिए बिल्कुल सीरियस हैं, यू नीड टू नाउ बकल अप एंड लेट्स start with the session. So first question on the screen. I hope so the question is visible. Yes, क्वेश्चन दिख रहा है आपको? हाँ, चलिए.
Question is quite easy. You have to tell me what is the minimum number of days so that the probability that the project cannot be completed is 5%. Then number of days is. Question थोड़ा सा हटके. Question is slightly different from the usual pattern जो आप देखते हैं. Question ये है, what is the, let me hide myself. What is the minimum number of days so that the probability that the project cannot be completed is 5%? What is the number of days? Okay, so whenever you are taking up these kind of question, first step is draw the network diagram. है ना, सबसे पहला स्टेप है ड्रॉ द नेटवर्क डायग्राम एंड देन प्रोसीड फॉरवर्ड. तो आपके लिए नेटवर्क डायग्राम के लिए आई थिंक सफिशिएंट डेटा इज देयर. ड्रॉ द नेटवर्क डायग्राम. हाँ बिल्कुल होगा मनी, बिल्कुल होगा. 8 बजे भी क्लास होगा, 8 बजे वेलोसिटी का क्लास होगा, राइट, वेलोसिटी एनालिसिस, और अभी आपका इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ठीक है, वो वाला क्लास होगा, डोंट वरी. मैंने आपको कल बताया था शेड्यूल 5 o'clock, देन 7 o'clock, देन 8 o'clock विल बी मीटिंग 3 डिफरेंट टाइम स्लॉट, 2 क्लासेस यूट्यूब पे, 1 क्लास आपकी ऐप पे. ओके, चलिए ड्रॉ द नेटवर्क डायग्राम एंड टेल मी व्हाट इज द करेक्ट आंसर टू दिस. चलो लेट्स ड्रॉ द नेटवर्क डायग्राम. एक्टिविटी 1 2 1 3 एंड 2 3. एंड दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व बाय द सिविल एस्पिरेंट्स आल्सो, क्योंकि वो भी पर्ट सीपीएम पढ़ते हैं. सो 1 2 1 3 then 2 3 2 4 then 3 4 and 4 5. हाँ ठीक है, राइट, 4 5. चलिए अब बताइए, सबसे पहले यू हैव टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम. हाउ वी कैन कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम? अगर आपको पर्ट एनालिसिस में यू आर हैविंग द 3 टाइम एस्टिमेट्स, तो एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम यू कैन कैलकुलेट बाय सिंपल फॉर्मुलेशन, ऑप्टिमिस्टिक प्लस 4 टाइम्स ऑफ मोस्ट लाइकली प्लस पेसिमिस्टिक डिवाइड बाय 6, है ना. अप्लाई दैट फॉर्मुलेशन एंड टेल मी व्हाट इज द इंडिविजुअल एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम ऑफ द डिफरेंट एक्टिविटीज, है ना. चलिए जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए. यस, तो यहाँ पे लेट मी गिव यू द फॉर्मुलेशन, दैट इज ऑप्टिमिस्टिक प्लस 4 टाइम्स ऑफ मोस्ट लाइकली प्लस पेसिमिस्टिक डिवाइडेड बाय 6. ठीक है, चलिए क्विकली व्हाट इज द आंसर टू दिस. तो एक एक करके कैलकुलेट करते हैं. दिस इज 12 प्लस 15 इंटू 4, 60 प्लस 24. व्हाट्स द वैल्यू? एक एक एक्टिविटी का यू हैव टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम. लेट मी हाइड माई सेल्फ सो दैट यू आर एबल टू सी द वैल्यूज. ठीक है, चलिए क्विकली व्हाट्स द वैल्यू. तो 12 प्लस 15, 15 इंटू 4, इसको इंटू 4 कर दीजिए, तो 60 प्लस 24, दिस विल बी समवेयर अराउंड 16, है ना. 16, this is 32 plus 16, that is equal to this 48, so 8, right. Then we'll be having 48, 48 plus 24, so this is 1 2 12, है ना. Next is अच्छा 2 4 के लिए देखो, if you see it will be 0, it will be 0 because, है ना, not 0, it will be 6, it will be 6, right. इसके लिए we will be having 36 plus 18. जल्दी से बताइए. 9 and the next one is 18. Are we having this set of values? Please check everyone. Are we having this set of values? 16, 8, 12, 6, 9 and 18. Are we having this values? अगर ये value है तो we can write off this values in the network diagram and get the critical path. Critical path आ जाएगा. Yes, चलिए. So this is 16. 1 3 के लिए we are having 8. 2 3 के लिए we are having 12, 2 4 के लिए we are having 6, 3 4 के लिए we are having 9, and this is 18. This is 18. Yes, we are having this as the network diagram. जैसे अगर आ गया तो प्लीज एक बार thumbs up बोलिए. Yes, okay, clear है everyone. चलो let's calculate what is the critical path. So the critical path will be 0. This is 16. 16 plus 12 is 28. 28 plus 9 is yes, आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया. 28 plus 9 is 37, है ना. यहाँ पर 22, तो यहाँ पे 37 आ जाएगा. 37 plus 10, 47 plus 8. Are we having 55? Yes. Are we having the expected completion time as 55 days? Very good evening all of you. Good evening. Good level of questions है. कुछ बहुत ही खतरनाक क्वेश्चंस आज लेके आया हूँ. बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन, मतलब इसमें आपने इससे क्वेश्चन देखे भी नहीं होंगे, राइट. सम क्वेश्चंस व्हिच आई सी, मतलब उसमें आपका लॉजिक का टेस्टिंग होगा. ठीक है. सो दिस इज योर
क्रिटिकल पाथ, 1 2 3 4 5 है ना, 1 2 3 4 5 is the critical path. Critical path. Now back to question. Question क्या बोल रहा है? The minimum number of days that the probability cannot be completed in 5%. So can you tell me what's the probability of completing the project? अगर the question is what is the probability that the project cannot be completed in 5%? Can we say the probability of completion is 95%? है ना, the probability of completion is 95%. अगर 95 है, what is the probability of z is equal to कितने वैल्यू पे you are getting 0.95? z equal to कितने वैल्यू पे we are getting 0.95? Can we say that is nothing but 1.65, approximately 1.65? Okay, yes, exactly 1.65, yes. Okay, so now we have to calculate the value of ts की वैल्यू निकालनी है, ठीक है. So z we have calculated, that is equal to 1.65. So z is equal to ts minus te by sigma. तो ts निकालना है, z वैल्यू ऑलरेडी वी कैलकुलेट, दैट इज 1.65, te वी हैव कैलकुलेटेड, दैट इज इक्वल टू 55. अब क्वेश्चन ये है सिग्मा कैसे निकालें. नाउ among all these different activities, first of all we have to identify which activity is the critical activity. तो कौन कौन सा है? 1 2 2 3, 1 2 2 3 3 4 and 4 5. Out of this set of activities, 4 activities are the critical activities. 1 2 2 3 3 4 4 5. और इन सभी का we have to calculate the value of standard deviation. यहाँ पे लगा देते हैं, ये लीजिए standard deviation, sigma value. तो sigma value का formulation क्या होता है? Sigma value is equal to, yes, what's the value of sigma? एक मिनट. Sigma is equal to TP minus TO by 6. तो 24 minus 12 by 6, what is the value? That is equal to 12 by 6 is 2, है ना? Yes, है ना? Yes, are we getting this? Second, 14 minus 10, that is equal to 4 by 6, 4 by 6. TP minus TO, TP ये है ये आपका है 4 by 6, है ना? हाँ 4 by 6, 2 by 3, 4 by 9, हाँ ठीक है, हाँ exactly. So this will be 11 minus 7, that is 4 by 6, and this is 27 minus 13, that is equal to 0.667. So ये हो जाएगा आपका 14 by 6, 14 by 6. But how we can calculate sigma of the two? आपका 2 square है ना, this is 2 square plus 4 by 6 whole square plus 4 by 6 whole square and 14 by 6 whole square plus 14 by 6 whole square. बताइए what is the value you are getting? What is the value you are getting? ठीक है, ये आने के बाद place it over here, TE value we know, Z value we know, we can get the value of TS. ठीक है, आज तक ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं है, so you can get a good ऐसे टाइप का क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे. चलिए जल्दी से बताइए. 2 square plus 4 by 6 whole square plus 4 by 6 whole square from हाँ very good, आ गया. Yes, we got the value, है ना? We got this value. चलिए, so now place it over here. Z is equal to TS minus TE by sigma of the critical path. Z की value है 1.65 is equal to TS. We need to calculate TE. We have already calculated, that is equal to 55 divided by sigma. CP is 3.2145. यहाँ से बताइए what is the value of schedule time? That is the final answer. That is the final answer, and that will be in days. That will be in days. बताइए कितना आंसर है? Quickly, simple question guys. 64.9. Okay, Bunny is getting 64.9. Anyone else who has calculated? Anyone else who has calculated 1.65 into 3.2145 plus 55? 60.3, 60.31 approximately, 60.31 days. So if you want to complete this project in probability is 95%, then you have to schedule for 60.34. Yes,
60.31 डेज में आपको कंप्लीट करना पड़ेगा. मिनिमम टाइम टू कंप्लीट इज 55 डेज बाय यूजिंग द क्रिटिकल पाथ, बाय यूजिंग द मेथड ऑफ फॉरवर्ड पास एंड बैकवर्ड पास कंप्यूटेशन. हमने यहां पे आराम से निकाल दिया द वैल्यू. ठीक है, फाइन. इज दिस क्लियर? 60.3. सो द फाइनल आंसर इज 60.2 डेसिमल्स तक आपको लिखना है. 60.31 डेज इज द करेक्ट आंसर. You can have 60.4 to 60.2 will be the range you will be getting. Yeah, 60.25 से 60.4 तक you can get a range. 2 decimals की बात करेंगे. Okay, is this clear everyone? Done. First question. चलिए, next question on the screen. Are you able to see the question? Question is very easy. The sale of a luxury car in a showroom is in 4 consecutive months starting from the March 70, 60, 86 and 94 respectively. The forecast for the March month is 70, having the smoothing constant equal to 0.4. What is the forecast for the month of July? Very easy question. They have given you the actual sale value, that is actual demand is being given. Okay, so this is given from the month of March, April, May, June and July, right? तो मार्च महीने का डिमांड इज गिवन एज 70, अप्रैल का 60, इसका 86, इसका 94. फोरकास्ट वैल्यू फॉर द मंथ ऑफ दिस इज 70. यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट्स द फोरकास्ट फॉर द मंथ ऑफ जुलाई. चलिए, इजी क्वेश्चन. I told you exponential smoothing is an important one. क्वेश्चन यहां से पूछते रहते हैं. इसका forecasting value they're asking. The forecasting for the month of July. I want answers from every single students. A 2 marks question. पिछला वाला भी 2 marks है, ये भी आपका 2 marks question है. चलिए, let's see who's gonna give me the answer. The forecast for the month of July is apply. देखो यहां पे देखो simple technique. If your demand and forecast are same, can we say the forecast for the next month will be exactly same as that of this one? यही होता है. अगर मान लीजिए I'm taking this as F1, so F2 that is forecast for the month of April will be equal to F1 plus alpha D1 minus F1. अब D1 और F1 same है, that is equal to 70. आ चुका है. Forecast for the month of May, that will be equal to F2 plus alpha D2 minus F2. तो F2 कितना है? F2 is 70, alpha value is given as 0.4, D2 value is 60 minus 70. So this is 66. Yes, are you getting 66? Chalo, forecast for the month of June is equal to F3 plus F3 plus alpha D3 minus F3. So F3 आपको मिला है 66 plus 0.4 into D3. D3 is 86 minus 66. Can you tell me the value? Yes, very good. अच्छा, क्या हुआ? नेट का इश्यू कुछ चल रहा है क्या? एक मिनट, लेट मी चेक. यस, आई थिंक नाउ इट्स ऑल गुड, है ना? ये लीजिए. चलिए, व्हाट्स द आंसर यू आर गेटिंग? आप बस आंसर बताते रहिए. 74. वेरी गुड, 74. So हमें निकालना है the forecast for the month of July, that is equal to forecast for the month of June plus alpha demand of June plus minus the forecast of June, minus the forecast of June. Okay, so this is equal to 74 plus 0.4 into demand of June is 94 minus 74. ये आ जाएगा 20, that is 8. So what is the value you are getting? What is the value you are getting? 82. Are you getting 82? 58 कैसा आ रहा भाई? Money, it should be 82 भाई. It will be 20 into 0.4, that is 8. 74 plus 8 is 82. Yes, so final answer is 82. 82 is the correct answer. The students who are getting 82, that will be the correct answer. Very good, बहुत बढ़िया. Done. Okay, clear. Next question. चलें. All right, chalo, next question on the screen, question number 3.
Okay, again a question from the forecasting. They are saying that in a given sales data, there are data for the 5 months. They are saying that forecast weightage is given 40, 30, 20 and 10 for the most recent. What is the difference between the actual sale and the forecasted value of the month number 5th? That is, they are saying that the demand of 5th month minus the forecast for the 5th month, this value they are asking. 1 marks question. It is a 1 marks question. इससे ज़्यादा नहीं है, 1 marks का question है. What is the difference between the actual sales and the forecasted value for the month of 5th month के लिए? Yes, Money, Shreyas, everyone, Prasak's question that is being asked in this particular question. Chaliye, quickly. So F5 is equal to 0.4 into 95 plus 0.3 into 105 plus 0.2 into 90 plus 0.1 into 100. 0.1 into 100. Okay, clear? So what is the value of F5? Tell me in the comment section. निकलते ही यहाँ पे प्लेस कीजिए. D5 is 110 minus F5. What is the value you are getting? Yes, shares, Money, everyone. Question in front of you. Try to solve it. 97.5. Very good. So this is 97.5. Place it over here. So 110 minus 97. What's the value you are getting? What's the value you are getting? 12.5. 12.5 answer. That's the final answer. 12.5 is the final correct answer. Very good. Very good. D5 minus F5 is equal to 12.5. 1 marks question था ये. इसमें ज़्यादा समय नहीं लगाना. Yes. चलो, let's try one more problem. एक और क्वेश्चन करते हैं बेहतरीन. Okay. चलो, let's try question number 4 on the screen. This is an interesting one. Students यहाँ पे confuse होते हैं. Let's see. Following details for the small manufacturing company is available. Actual sales is being given. Fixed cost is being given. The profit for that given sale is being given. What will be the profit when the sale is 1,25,000? अगर आपका सेल 45,000 है, you are having the fixed cost of 10,000. The profit is only 8,000. So question is, what will be the profit when the sale value is 1,25,000? Try this problem. Try this question. Let us see. Who's gonna answer to this? पहले बताइए what logic you will be applying. पहले ये logic की बात करते हैं. What logic you will be applying? Then we'll be going for the solution. Hint चाहिए तो बताइए. I'll be giving you the hint. नहीं तो I'll be directly proceeding with the solutions. Hint क्या चाहिए बताइए. कौन सा concept लगेगा? Okay, let me give you a hint. Have you heard about the profit to volume ratio? Profit to volume ratio. बस यही लगा दीजिए. यही लगा दीजिए. You will be getting the correct answer. Apply the concept of profit to volume ratio. You will be getting the correct answer to this question. Quickly guys, quickly. Profit to volume ratio बताना है आपको. We know that what is profit to volume ratio. Profit to volume is equal to, either we can use S minus V by S, or we can say this is equal to fixed price plus profit by S. है ना? And we know that for a particular product, P by V ratio is always constant. Profit to volume ratio is always constant, right? तो चलिए यहाँ पे लगाते हैं ये concept. So we can say F plus P1 by S1 is equal to F plus P2 by S2. Fixed price is given, that is 10,000, plus profit for the first sale is 8,000, and corresponding sales value is 45,000. Okay, that is equal to 10,000 plus the profit for the second value you have to calculate, and corresponding sale value is 1,25,000. 1,25,000. तो यहाँ पे मुझे बताइए what is the value of P2. बस solve करना है और आंसर निकालना है. ऑप्शन A, B, C और D. बताइए. ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C और ऑप्शन D. Simple logic. A, B, C or D. Is it 40,000, 36,000, 32,000 or 44,000? What is the value you are getting? Quickly,
देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर करता है। 18,000 into 1,25,000 divided by 45,000 minus 10,000, that will be the answer. 2,000 पक्का, 40,000 ऑप्शन ए। 2,000 तो नहीं होगा यार, 2,000 के ऑप्शन नहीं, हाँ ऑप्शन ए, वेरी गुड शेख इरफान, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। 40,000 प्रॉफिट आपको मिलेगा इफ यू आर हैविंग अ सेल्स ऑफ 1,25,000, यू विल बी गेटिंग अ प्रॉफिट ऑफ 40,000। और ऐसे क्वेश्चन ना पूछे जा सकते हैं। दिस इज एक्चुअली, बहुत लोग यहाँ पे पता क्या लगाएंगे, ब्रेक इवन का कंसेप्ट लगाएंगे। मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स विल बी अप्लाइंग द कंसेप्ट ऑफ ब्रेक इवन, या यूनिट सेलिंग प्राइस निकालने की कोशिश करेंगे, या यूनिट एक्स की वैल्यू निकालेंगे, देन दे विल बी गोइंग फॉर द फॉर्मुलेशन टोटल कॉस्ट, है ना। तो दैट इज नॉट द वे इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। ऑलवेज रिमेंबर दैट व्हेनेवर यू आर हैविंग दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, अगर आपको सेल्स दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, एंड दे आर आस्किंग द प्रॉफिट और सेल्स वाइस वर्सा, then you have to apply the concept of profit to volume ratio. Okay everyone, is this clear? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th on the screen. Question from the Queen model, I think. Yes. A person repairing cycle finds that the time spent on the cycle has exponential distribution with a mean value of 25 minutes. शेख इरफान, अगर मैं आपको बोलूं ना 40 मार्क्स क्या, आप 50 प्लस भी ला सकते हो, 3 मंथ सफिशिएंट है, इवन 60 प्लस भी टारगेट कर सकते हो। आई कैन टेल यू मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड 30 में से यू ट्राई टू गो फॉर 25 मार्क्स और 24 मार्क्स, ठीक है, 24 मार्क्स तो यहां से आ गए। नेक्स्ट गो फॉर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, 15 मार्क्स का आता है आउट ऑफ 15, लेट अस सपोज यू आर कवरिंग 10 मार्क्स, ठीक है, वो कर लीजिए। तो कितना हुआ, 25 प्लस 10 35 आ गया। अभी मैंने सिर्फ टेक्निकल का एक सब्जेक्ट लिया है। You go for industrial, you go for heat transfer, easy subjects पहले उठाइए, मैकेनिक्स, इन 3 सब्जेक्ट से you will be getting 12 to 15 मार्क्स, ठीक है। मान लीजिए वर्स्ट टू वर्स्ट केस 10 मार्क्स वहां पर भी ऐड कर दीजिए, कितना हुआ 45। तो 45 मार्क्स इजीली यू कैन स्कोर। देखो 50 मार्क्स तो आराम से ला सकते हैं if you're having a strategic approach, है ना, राइट। At this moment, if you are starting the gate preparation, I won't recommend, आप गेट का सिलेबस नहीं कर सकते अगर आप आज स्टार्ट कर रहे हैं। In that scenario, you have to concentrate on the selected topics, ठीक है। और उसके लिए I will be sharing a video, already मैंने शेयर कर दिया है, let us see, है ना, जिसमें आपको important topics जो हैं that you should be covering, 50 important topics, I'll be making it available as soon as possible. Okay, fine. 50 topics ये कर लीजिए ना, I can surely say 60 के अराउंड मार्क्स आप easily fetch कर सकते हैं। 50 टॉपिक पढ़ के ही 60 मार्क्स ला सकते हो आप। Okay, you will be able to get 60 marks if you are only studying that 50 topics. I'll be sharing that list as soon as possible in form of video. Okay. मिस्टेक भी होता है, बिल्कुल। देखो मैं वही ना, मैंने हर में से मैं फुल मार्क्स तो ले नहीं रहा हूँ। 15 मार्क्स का पूछा, मैं 10 तक मैं खींच रहा हूँ। 6 मार्क्स का पूछा है, 4 मार्क्स का खींच रहा हूँ, राइट। सो डेफिनेटली कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं वेर यू कैन इजिली स्कोर अ वेरी गुड नंबर ऑफ वेरी, लाइक इंडस्ट्रियल, frankly speaking, industrial, heat transfer, mechanics, these 3 subjects are the most easiest if I say, scoring also. इसके अलावा aptitude is a scoring portion, ठीक है। तो 4 टॉपिक से या 4 सब्जेक्ट से you can easily secure like 25 plus marks easily. बाकी एक एक करके कवर करेंगे, don't worry. Okay, चलिए back to this question. Question is a person length of the system. आज कुछ नेट का इशू, चलिए बताइए जल्दी से। हाँ अब सही है ना। व्हाट इज द आंसर फॉर दिस? Length of the system they are asking. So arrival rate is 12 cycles of 8 hours of day, so it is 12 by 8 per hour into 60. This much of number of cycles per minute. Okay, fine. So this will be 2, right, 2 3 3 20, 1 by 40 cycles per minute is the arrival rate, right. What is the service rate? Service rate is equal to 1/25 cycles per minute is the service rate. This is the service rate, this is the arrival rate. Now we can get the value utilization factor, that is equal to lambda by mu, that is 25 by 40. The question is, what is the length of the system?
लेंथ ऑफ द सिस्टम इक्वल टू रो अपॉन 1 माइनस रो, रो कितना है 25/40 डिवाइड बाय 1 माइनस 25/40, दैट इज इक्वल टू कितना 25/15, दैट इज 5/3, है ना 5/3, यस 5/3, 25/9, 25/9 कैसे आ रहा है, यस ऑप्शन सी, कैसे 5/3, सिंपल क्वेश्चन। मनी, Shreyas, option C, are we getting option C quickly? यही है ना 25/40, so this is equal to 15, 25/15, that is 5/3, option C is the correct answer. Done? Calculation mistake तो नहीं कर रहे हो, please check. You are not doing the calculation mistake, I hope so. Okay, देखो, the common mistakes that you can commit in the queuing model is the units. Please see the units appropriately. Units अगर आप नहीं convert करेंगे, then you will be getting a wrong answer, and that wrong answer will be available in the options. Is this clear? अगर आप units को convert नहीं करेंगे, you will be landing up with the wrong answer. And gate की सबसे अच्छी खास बात ये है, in the gate examination you will be getting that wrong value वाला option भी available. Is this clear? Option C done. देखो इसमें कोई difficult नहीं था, 3 lines on solution, but the concept should be clear. Okay, done. चलो next question, question number 6 on the screen. Done everyone? Okay, चलिए now go for this one, graphical method. To maximize the function 4x plus 3y, we are having two constraints being given. The number of independent feasible solutions are, इसमें हो सकता है majority of the students will be committing the mistake. It's a very important question. The question is, this is the objective function, right? We are having two constraints. You have to tell me what will be the number of independent feasible number of solutions. So chaliye, let us convert this into intercept format. This is x by 9 plus y by 8 less than equal to 1. First constraint we can write like this. Second constraint will be written as this is 5 by 11 plus y by 5 less than equal to 1. Okay, let us see what is the feasible region we are getting. So this is x, this is y, 9 and 8. This is 9, this is 8. Okay, less than equal to this region. 11 and 5, 11 and 5. Okay, chaliye. What is the answer? This is the feasible region. What is the answer? A 4, B 1, C infinite, or D none of the above? The number of independent feasible solutions. How many solutions will be obtained over here? A, B, they are saying the number of solutions. याद रखिएगा, they are not asking you the solution. They are asking you how many number of independent feasible solutions will be obtained in this particular problem. अब यहाँ पे mistake क्या होता है? You'll be saying, sir, we'll be taking the corner points. Corner points देखेंगे, calculate करेंगे, then we'll be getting, that will be the optimal value. I'm not asking you the optimal value. Again, I'm repeating the number of independent feasible solution. Can we say in this particular feasible region, this is the feasible region, right? This is the feasible region. So, इस feasible region में कितने number of solutions are there? There are infinite solutions. We can have infinite number of points in this. So, option C is the correct answer. Option C is the correct answer. यही mistake करते हैं लोग, वो questions को पढ़ते ही नहीं है. Students are not reading the question appropriately. Option C is the correct answer. Understood? They are not asking you the number of optimal solution. Question is the number of independent feasible solution. That is option C. Understood? ऐसे question से ही आपका concept clarity बढ़ेगा. Understood? Okay. Done. Can we proceed now? Question number 7. Question was easy. Only thing is you need to apply the logic. Chalo, next question. Question number 7 on the screen. The total monthly cost equations for the production and distribution are as follows. The production cost is being given, the distribution cost is being given.
द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट शुड बी प्रोड्यूस टू मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट. चलिए, how many number of units should be produced in order to minimize the total cost? कितना आपको प्रोडक्शन करना पड़ेगा in order to minimize the total cost? Yes, tell me. Now we know that total cost क्या होता है, जितने number of cost है that is the total cost. Here we are having two cost only, that is production cost and distribution cost. add कर दीजिए 4x square 4x square minus 19x plus 2500 plus 3x square minus 37x plus 2600. This is the total cost. They are saying that the number of units to be produced to minimize the total cost. To minimize the total cost, what you have to do? Sir, differentiate this total cost with respect to x and make it equal to 0. Differentiate करो, आंसर निकालो. This is equal to 8x minus 19 plus 6x minus 37 equal to 0. है ना? So this will be equal to 14x is equal to this is 6 156. So x value is equal to 4. That's it. Answer 4. 4 is the correct answer. Is this clear? क्वेश्चन देखो, थोड़ा पढ़िए, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होते हैं. ओनली थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड इज हाउ टू अप्रोच टू सॉल्व द क्वेश्चन. है ना? कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, दैट शुड बी क्लियर. बहुत लोग क्या करते हैं, दे आर कंसंट्रेटिंग ऑन कंप्लीटिंग द सिलेबस. कम क्या हो जाएगा इफ यू आर नॉट आंसर. Okay, now I think all good. Perfect. Yes. Okay. चलिए next question, question number 8 on the screen. Question number 8 on the screen from the PERT and CPM. PERT CPM से question है. A project consists of following activities. What is the probability that the project will be completed in 24 days? 24 days में complete हो जाएगा. What is the probability? NAD problem है. It's an NAD problem. Quickly. NAD problem है. Quickly tell me what will be the answer to this. Probability that the project will be completed in 24 days. Standard deviation is given as 2 days, and आपको standard deviation is given as 2 days. So let us see who is gonna give me the answer over here. Quickly. Done? Done? चलिए, let us see. 1 second guys. नेट का इशू चल रहा है. अब ठीक है. ऑल राइट, हो गया. चलिए देखो, 2 परफेक्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम. क्रिटिकल पाथ देखते हैं. अरे ये एरो उल्टा है, ठीक है. दिस एरो इज उल्टा, यहाँ पर आएगा. ये पता नहीं एरो क्यों उल्टा बना दिया यार, हद ही करता है. 0 2 2 plus 4 is 6. 6 plus 7 is your 13. 13 plus 2 is 15. 15 plus 4 is 19. 13 plus 9 is 22. 22. Yes. So expected completion time, minimum time to complete the project is 22 days. TS value is 24 days. Okay. This is the critical path. This is your critical path. So standard deviation is equal to 2. So what's the value of Z? Z is equal to TS minus TE by sigma. 24 minus 22 by 2, that is equal to 1. What is probability of Z equal to 1? Probability of Z equal to 1 is 0.8413. आपसे पूछा है probability, that is 0.8413 is the correct answer. 0.8413. Z की वैल्यू 1 मतलब 84%. 84%. Yes. Okay. Clear है? Understood?
84.13% is the final correct answer. Done. चलिए next question. हाँ, very good, very good. Shares. Question number 9th on the screen. अच्छा, before going to the 9th question, this is the rank up series going on, जिसमें we will be covering 500 plus questions. Already started yesterday, है ना? Yesterday, day before yesterday हमने किया था, और पहला सेशन कल strength of material का था. So slowly we'll be covering each and every subject for the entire 2 branches, mechanical and civil. Okay, next question. For a company, if the total inventory cost of 1000 units and 1600 units is same, what is the value of economic order quantity that should be ordered according to Harris-Wilson model? That means, what is the value of Q star if Q1 is equal to 1000 units and Q2 is equal to 1600 units, and they're saying that the total inventory cost, that is TIC for Q1, is equal to TIC for Q2. If you remember, मैंने इस पे एक वीडियो बनाया था, a short trick. If you apply that short trick, it will hardly take 20 seconds to solve. It hardly takes 20 seconds to solve. ठीक है? 20 seconds भी बहुत ज़्यादा बोल दिया. 10 seconds. It is given the question, the total inventory cost at 1000 units is equal to 600 units is same. Then what is the value of economic order quantity? Anyone who has calculated? पहले will be going for the conventional method, मतलब जो standard method है, will be solving the question like this, and after that will be taking with the shortcut method also. Okay? Done? Clear है? What is the answer to this? देखो, what is total inventory cost? Ordering plus holding cost. What is ordering cost? D by Q into CO, या Q1 ले लेते हैं, plus Q1 by 2 into CH is equal to D by Q2 into CO plus Q2 by 2 into CH. इसका शॉर्टकट भी है, पहले हम स्टैंडर्ड मेथड से देखते हैं. D by Q1 into CO minus D by Q2 into CO, that is equal to Q2 by 2 into CH minus Q1 by 2 into CH. So if you take DCO common, D into CO common, that is equal to Q2 minus Q1 by Q1 Q2, right, is equal to CH by 2 common ले लेते हैं, that is Q2 minus Q1. So this get cancelled out. So I can say 2DCO by CH is equal to Q1 Q2. What is 2DCO by CH? That is equal to Q star square, है ना? Q star, that is equal to Q1 into Q2. That is equal to Q star is equal to under root of Q1 Q2. So always remember that ये हमारा short trick है. Whenever the total inventory cost for the two different units are same, we can directly say the economic order quantity will be equal to the under root of Q1 into Q2. Okay, so now we can directly apply your Q star will be equal to under root of 1000 into 1600. Under root of 1000 into 1600. What is the value? 1264.91 units per order. Okay, 1264.91 units. Very good, very good. 1264 is the final correct answer. या 1265 अगर आपको इंटीजर में आंसर देना है, then you can say 1265 will be the correct answer. All right, clear, perfect, done. ठीक है, ये आपका शॉर्ट ट्रिक है. इफ दिस इज ओनली एप्लीकेबल इफ योर टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट फॉर Q1 इज एग्जैक्टली इक्वल टू टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट फॉर Q2. टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट फॉर Q2, अगर ये कंडीशन है देन ओनली, या फिर टोटल कॉस्ट भी बोल सकते हैं, बिकॉज परचेज कॉस्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इन्वेंट्री साइज. राइट, चलिए perfect. Question number 10 चलते हैं. Let us go for question number 10 on the screen again from a queuing model but slightly different approach. In a queuing model, arrival rate is given as 3 per hour. आपको lambda दे रखा है 3 per hour. Service time is 15 minutes, so we can service rate is equal to 15 by, or we can say 60 by 15 per hour, that is equal to 4 per hour. ठीक है, and they are saying that the wage rate is 4 per hour. आपका जो wage rate है that is 4 rupees per hour.
idle cost is 6 per hour, then what will be the total cost of the queuing model for 1 hour? 1 घंटे के लिए what will be the total cost? चलिए, what will be the total cost of this entire queuing model? कैसे निकालें? सर अभी तक तो हम लोग लेंथ ऑफ द सिस्टम, लेंथ ऑफ द क्यू और वेटिंग टाइम ऑफ द सिस्टम, वेटिंग टाइम ऑफ द क्यू पढ़ते थे. अब ये क्या आ गया बताइए? देखो सिंपल सा लॉजिक है. इफ द वेज इज बीइंग गिवन, can you calculate what's the length of the system? Or length of the system is basically you can calculate in number of patients या number of persons per hour, है ना? जल्दी से निकालिए the length of the system. So the length of the system, rho is equal to lambda by mu, that is equal to 3 by 4. So length of the system is equal to rho upon 1 minus rho, है ना? So this is 3 by 4 upon 1 minus 3 by 4, that is equal to 3. है ना? That is equal to 3, right? Okay. Now they are saying that total cost. अब total cost क्या होगा? इतने number of person are there in the system and we have to multiply. ये कितना है? ये इतने number of system per hour, 1 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, right? और 1 घंटे का idle cost is 6. So we can say 6 into 3, है ना? 6 into 3 total आ गया. बताइए कितना है? What is the answer? भाई 6 into 3 आपका ये होगा the total cost, है ना? हाँ, वेरी गुड. चलिए बताइए, ये 1 घंटे के लिए हम लोग बात करें, है ना? तो 6 into 3, लेट मी से दिस इज फॉर 1 hour, ठीक है? प्लस 1 घंटे के लिए काम करें 4 into 1 भी करते थे. सो दिस इज 18 plus 4, that is equal to 22. So in 1 hour you gonna charge rupees 22 क्योंकि total length of the system is 3, है ना? तो 3 आपके पास कस्टमर्स तो होंगे, तो उनका आइडल कॉस्ट यहाँ पे 6 पर आ रहे हैं. सो 6 into 3, राइट? प्लस 1 घंटे के लिए यू आर डूइंग द वर्क, सो 4 into 1 विल बी द वेज रेट. सो टोटल यू विल बी हैविंग 22 एज द टोटल कॉस्ट फॉर द क्यूइंग मॉडल. ओके, द टोटल कॉस्ट फॉर द क्यूइंग मॉडल विल बी इक्वल टू 22. डन? क्लियर? गेट में डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते, लैंग्वेज डिफिकल्ट कर देता है. गेट में कभी भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते, ओनली द लैंग्वेज मेक्स द प्रॉब्लम डिफिकल्ट. ठीक है, फाइन. चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं. 11th क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन. हाँ, प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल. बताइए, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ मंथली सेल ऑफ अ सर्टेन आइटम इज एज फॉलोज. month 1 to month 8 probability is being given. The carrying cost of the inventory is 50 per unit per month. So carrying cost is, holding cost is given as rupees 50, right, per unit per month, right? And the shortage cost is rupees 84. The back order cost is equal to rupees 84 per unit per month. Okay, so they're asking what is the optimum stock level. Perishable item वाला मॉडल है ना? Yes, quickly बताइए, what is the answer? This type of model we call it as your profit model, है ना? Yes, quickly, how to calculate? याद आया कुछ? In this problem you need to apply the concept of cumulative probability. Cumulative probability निकालेंगे, वहां से you will be identifying the range and always we try to calculate the optimal for the higher range. याद आया कुछ? Yes, नहीं आया? देखो, we are having this for 8 months, तो यहाँ पे यहीं पे लिख देते हैं cumulative probability, cumulative probability, right? So this is 0.06 plus 0.08 is 0.14, 0.14 plus 0.13 is 0.27, 0.27 plus 0.19, अब मुझे कैलकुलेटर यूज करना पड़ सकता है, that is 0.43. ठीक है? Yes, 0.43 है ना? यहाँ पर मैं बॉक्स बना देता हूँ. Cumulative probability, let us quickly calculate. Okay, 0.43 plus 0.26, that is 0.69 plus 0.13 is 0.82
दिस इज 0.8, कहीं हमने कैलकुलेशन मिस्टेक किया तो देख लीजिए, 6 + 8 + 13 20 + 19 46, अच्छा दिस इज 46, दिस इज 46, देखो क्योंकि लास्ट में क्यूरेटिव प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू 1, है ना, 46 + 26 दैट इज 72, 13 that is 85 + 8 93, this is okay. So we know that the cumulative probability of n minus 1 is less than cb upon cb plus ch less than equal to probability of n, यही है, less than equal to probability of n. So what is this value, cb upon cb plus ch, cb upon cb plus ch, that is equal to 84 divided by 84 plus 50. What is the value? 84 divided by 84 plus 50, that will be near about 0.626. Okay, so we are having probability of n minus 1 less than 0.626 less than equal to probability of n. So we have to identify this value is ranging between कौन से दो values के बीच में, कौन से दो रेंज के बीच में. It is basically situated between 4 and 5. It is basically situated between, मतलब we can say, I can say that P4 less than 0.626 less than equal to P5, यही है. Yes, 4 और 5 के बीच में आ रहा है, देखो this is 0.7 this is 0.46 and we always need to take the higher value because equality sign तो higher के साथ है. So the final answer is 5, option A. Okay, the final answer is 5, option A. Is this clear? This is, we call it as the your profit model, unit profit model. Okay, yeah, demand profit model, we call it as a demand profit model. Done. In probabilistic approach, in the probabilistic model, we are studying this for the perishable items. Perishable items are those items whose life is very less. Done. Option A is the correct answer. चलो next question चलते हैं जल्दी से. Question में 12th on the screen. Okay, a department head has 4 tasks to be performed and there are only 3 subordinates. The estimation for the time in hours each subordinate would perform in the given table is given. The tasks are allocated to each man in such a way that the total time is minimized. What will be the minimum time? पहले बताइए क्वेश्चन कौन से टॉपिक्स हैं. आधे बच्चों को तो पता ही नहीं लगता सर क्वेश्चन कौन से टॉपिक्स हैं. This question is from which topic? Tell me. पहले बताइए टॉपिक कौन सा है, उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे. क्या ये this is an LPP problem or a PERT CPM or a forecasting or an assignment problem or a transportation problem? What is the topic? Which topics they are asking you? यहाँ पे क्या करना है आपको, देखो the question is the department head has 4 tasks to be performed. So there are 4 tasks P, Q, R, S and there are 3 subordinates. So you have to select the task according to the you have to select the men according to the task so as to have the minimum time of completion. So can we say this is a question from the assignment model? This is a question from the assignment model. Yes, लगाइए concept. Hungarian method. तो सबसे पहला step होता है whenever you are solving question either from assignment or transportation, the first step is whether there is a balance or not. क्या ये मॉडल हमारा बैलेंस है? With this particular problem is a balanced assignment model, assignment problem or not? सबसे पहला क्वेश्चन, is this a balanced one? If no, then how to balance? अगर ये बैलेंस है तो ठीक है. If no, then how to balance? Always remember that assignment model में we have to take a square matrix. We have to take a square matrix, or it is not a square matrix, it is 4 cross 3. So we have to add a dummy. तो dummy कहाँ पर होगा? यहाँ पे लगाते हैं dummy. Right? 0, 0, 0, 0. Perfect. Now it is a balanced model. Now it is a balanced model. Now you can apply the Hungarian method and get the final. So we can go for row reduction. Row reduction करने की ज़रूरत ही नहीं है because every row the minimum value is 0. If you subtract 0 from each and every value, you will be getting the same.
9 minus 0 9, 24 minus 0 is 9. So now we have to go for column reduction. चलिए column reduction करते हैं. Let us go with the column reduction. 4 by 4 matrix हो गया. 1 2 3 and 4. 1 2 3 and 4. तो कॉलम नंबर 1 में द मिनिमम इज 9, तो 9 को सब्ट्रैक्ट करते हैं. सो 9 minus 9 is 0. 17 minus 9 is 8, है ना, 8. दिस वैल्यू अगर माइनस करेंगे, दिस इज योर 28. यहाँ पे माइनस करते हैं, दिस विल बी इक्वल टू 5, राइट. ओके, सेकंड में मिनिमम वैल्यू इज 22. सब्ट्रैक्ट दिस वैल्यू इन ईच एंड एवरी कॉलम, in particular this particular column. So this is equal to 2, this is equal to 7, this is 0, this is equal to 10, right? 0 8 28 5. Very good. थर्ड वाले में minimum is 8, so this is 6, this is 0, this is 10 and this is 22, this is 14. Okay, and this is 0, right? Done. Please check everyone. P, Q, R, S, and this is A, B, C, and this is your dummy. ये आपका dummy है. Okay, so you have to now allocate. Allocate करने के लिए क्या करते हैं? Row scanning, column reduction. याद आया कुछ? Row scanning and column reduction. चलिए row number 1 पे चलते हैं. Single 0 है, double 0 है, double 0 leave it, double 0 leave it, double 0 leave it. यहाँ पे single 0 allocate करेंगे और remove करेंगे. Okay. कॉलम नंबर 1 पे चलते हैं. सिंगल 0 allocate and remove, सिंगल 0 allocate and remove, single 0 allocate and remove. So now we have crossed each and every 0. Allocation is being done and we're using 1 2 3 4. This is a optimal solution. This is a optimal solution. Now I can say the final set of answer will be क्या बताइए? What will the final answer? जो हमने यहाँ पे allocate किया है, that is the final answer. That is ये वाला और ये वाला नहीं. रो नंबर 2 में थर्ड, रो नंबर 2 में सॉरी कॉलम नंबर 3 में 2 एंड इसमें 0. So the final answer of this is 9 plus 22 plus 8 plus 0. That is equal to 39 hours. Option A. Yes? Are we getting option A, 39 hours as the correct answer? Done. 39 hours is the final correct answer. Okay? Perfect. Assignment model से question था. Done. Clear? चलिए, let's proceed for the next question. Next question चलते हैं. There are lot many questions, but I think I have to give you some question as an homework. वो इसी बंद कर. A company can produce 1000 units per day. That is small p is equal to 1000 per day. Okay. And per day sale is 400. That means your daily demand is 400. They are saying that if company has a storage limit because of which they cannot store more than 24,000 units. So Q maximum is 24,000 units. Okay, the setup cost is equal to 3,000 rupees. The company produces a quantity per run in such a manner that the maximum quantity is equal to the storage capacity. If the production runs for 300 days in an year, the holding cost is 0.1 of C. Then what is the value of unit cost? तो आपको बताना है what is the value of C. और ये भी बोल रहे हैं the maximum quantity stored is equal to the storage capacity. जितना आप maximum बनाते हैं that is the storage capacity. That means optimal level हो रहा है बिल्कुल. So quickly how to proceed? ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आपके अदर गेट के PYQ में आज तक पूछे नहीं है. So let us see who's gonna give me the answer to this. A company can produce 1000 units per day. Per day sale is 4000 units. What is the value of unit price? कैपिटल सी की वैल्यू पूछी है इसमें. क्यू स्टार निकाल सकते हैं. कैन वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्यू स्टार बाय द वैल्यू ऑफ क्यू मैक्स? क्या कोई फॉर्मुलेशन है वेयर यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्यू स्टार बाय क्यू मैक्स? अगर आप याद करो, इफ आई ट्राई टू रिकॉल ग्राफ, ऐसा होता है कुछ प्रोडक्शन मॉडल. दिस प्रोडक्शन मॉडल है ना.
So this is your production rate, this is your Q, Q स्टार मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे वी आर हैविंग द प्रोडक्शन P माइनस D एंड दिस इज योर D। याद आया कुछ ऐसा ग्राफ? इतनी बार हमने सॉल्व किया है, we have solved n number of times this type of questions. This is your demand rate, this is P minus D, this is TP, right? This is your Q max, this is your Q max, this is your Q star, ठीक है, fine. So I can say Q maximum is equal to P minus D into TP and Q star is equal to P into TP. ये आपका P है, right? So if you take the ratio, I can say Q star by Q maximum is equal to P minus D by P. So here Q star will be equal to P minus D by P into Q max. आपको ये सब वैल्यू गिवन है, बस निकालिए। आपको दे रखा है P वैल्यू इज इक्वल टू 1000, है ना, P वैल्यू इज इक्वल टू 1000। चलो D is equal to 400, D equal to 400 divided by what's the value of capital P, that is equal to 1000. What's the value of Q max, that is equal to 24,000. What's the value of Q star, बता सकते हैं? Q maximum की वैल्यू, कुछ गड़बड़ किया है क्या? ओहो, उल्टा कर दिया भाई, वही तो सोचा कुछ गड़बड़ किया, क्योंकि Q स्टार की वैल्यू ज्यादा आएगी ना Q मैक्स से, Q स्टार की वैल्यू ज्यादा आएगी ना। रेशियो मैंने ये ले लिया और ये यहाँ पर ऐसे लिख दिया, P अपॉन P माइनस D, राइट। तो P की वैल्यू कितनी है? P वैल्यू इज 1000 and P minus 1000 minus 400. Solve it and tell me what's the value. Are we getting this is 6,000, तो ये हो जाएगा 4,000, 40,000, sorry 40,000. Are we getting 40,000 units? The value of Q star 40,000. Very good, very good shares. 40,000 आ गया सभी का। So Q star calculated, we know the formulation, Q star will be equal to 2DCO by CH into P upon P minus D. यही होता formulation. Q star we know that is 40,000. To annual demand नहीं दे रखा, but daily demand is given 400. So 400 into 300, that is number of days, है ना, number of days, that is 300. चलो, very good. CO is given as 3000 डिवाइड बाय CH, हम लोग पहले CH को ऐसे रहने देते हैं, राइट, इनटू P is 1000 डिवाइड बाय 1000 minus 400. So from here you can get the value of CH and we know that what is CH? CH is equal to 0.1 of C. आपको C की वैल्यू निकालनी है, बस यहाँ पे प्लेस कर दीजिए 0.1 of C, 0.1 of C. चलिए, what is the value you are getting? बस only calculate. तो so this is a new pattern of question, आज तक गेट में नहीं पूछा है। I told you कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो पहली बार आप देखेंगे। Solve it and tell me what's the answer. 40,000 into, or we can say square, into 0.1 into 600 divided by 800 into 300 into 3000, 2000. Yes, what is the value? What is the value you are getting? Done. Okay, बताइए what is the value of C? 10% है या 10% है ना? अच्छा, 0.1% है, so 0.01 of C, 1% है ना, वही मैं देखा 0.01, 1,14,000 ना ना ना, देखो एक बार चेक करो, कैलकुलेशन चेक करो गाइस। Yes, 114. आर गेटिंग 114। पहले CH निकाल लीजिए, आपको अगर इतना डाउट आ रहा है तो CH निकाल दीजिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P? 3000 है ना।
CH निकाल दीजिए, from there you can get the value. 114. Anyone else who has calculated? Anyone else who has calculated the value for this? 6 ये हो जाएगा 1000 into 400 into 300 into 3000 into 1000 divided by 600. ठीक है, 75 रुपीज 75 पर यूनिट. क्या क्या कैलकुलेशन कहाँ कर रहे हो भाई? आपके सामने मैं कर दिया मैंने. ₹75 per unit is a final correct answer. Okay, 75 rupees per unit is a final correct answer. Done. भाई C डिनोमिनेटर में ना, C की वैल्यू निकालनी है. So you are final getting the answer as 75 rupees. This is the final correct answer. Okay, clear है? फाइन. सो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं एज एन होमवर्क, क्योंकि 500 क्वेश्चंस करने हैं. देयर आर लॉट मेनी क्वेश्चंस. ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी है, इसमें आप टेबल बनाएंगे. दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम एमआरपी. एमआरपी का क्वेश्चन है, यू कैन इजीली सॉल्व. दैट इज फ्रॉम बिल ऑफ मटेरियल. ट्राई करेंगे. सो क्वेश्चन नंबर 14 onwards we are having set of questions. Before that, going for the homework questions, Negi sir will be coming up live on 11th of October, जिसमें he'll be telling us about is it possible to cover GATE 2024 syllabus timely if you're starting from 11th of October, right? Okay, apart from this, scholarship tests will be scheduled this Sunday from 9 a.m. to 9 p.m. For registering this, the link is there. And this is all about. और ऐप में आपको पता होगा will be coming up live at 8 p.m. हाँ हाँ बिल्कुल, भी मैं सेंड करने वाला हूँ. देखो क्वेश्चन नंबर 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20, 21, 22. Yes. So these are the homework questions, self practice question. क्योंकि 500 क्वेश्चन अगर आपको 15 दिन में करने हैं, तो कुछ क्वेश्चंस will be doing in the live session, some question will be giving you as a homework. By that, you'll be able to cover 500 per question. Okay, I'll be sharing this PDF after this session. अभी करने वाला हूं. कहां करूंगा? Over this particular channel, that is Mechanical by Suraj Gopi. Okay, so do join this if अगर आपने अभी तक join नहीं किया है. And I'll be sharing the questions, and the questions where you are feeling difficult, please do write the question number in the Telegram channel. I'll be sharing the solutions. ठीक है, solutions आपको मिल जाएंगे यहीं पर ही. So make sure you are all joining. So thank you guys for joining with me. I hope you all enjoyed. This is it from my side. Thank you. Bye bye. Take care. Stay safe. Bye bye.